Hello friends, welcome back again to Economic Deco. Today I am back again with a new topic which is a most requested video, which is your commercial bank, how it help for the economical development for the nation, right? So ये टॉपिक है कि कमर्शियल बैंक के हमने फंक्शंस देख लिए वीडियोस में. हम वी हैड टू एक्सप्लेन यू द प्राइमरी फंक्शंस, द लायबिलिटी एसेट साइड, the meaning, the definition, the credit creation process of commercial bank. And now today we are going to see that really is that really commercial bank having so much of functions, so they are actually helping the development for the economical aspect. Is that really true? How it is? So we are going to start one by one how it is helpful, right? So commercial bank is very important part for the nation, for any nation, right? So bank sector act as a backbone for the modern business today, we can say. And well organized banking system is necessary for the economic development of a country, which is very important. Then how it affect or how it help for the economical development for the nation, we are going to see, and we are going to explain in one by one the points which I had created. So in examination, when you are going to write the point, right, the point has to be same, but you can elaborate point from your own language, from your own definition, from your own word, that is completely okay. So first point I created, that is a bank promote capital formation for the mobilizing saving. How it create, banks create capital formation. बैंक कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से क्रिएट करता है? Basically, commercial bank accept all the kinds of deposits from individual and from business. So these deposits are made in available to the businesses, which will make us of the productive purpose, right? So जो deposits बैंक की तरफ आते हैं, whether it is individual, whether it is a business related, right? तो वो deposits क्या करते हैं बैंक? Lending money to mobilize their capacity of the money loan capacity, so they are going to contribute on that. So that is again a capital formation which gives capital for the bank, and bank using that capital for the giving loan to the entrepreneur, for the business person, which is very simple, right? So you can easily remember that. Second point, it says trade development. अभी ये trade development होता क्या है? Normally people hesitate to invest their money into the entrepreneurs, right? Commercial bank encourage them by providing them a short term or medium term loans, right? So directly एक इंडिविजुअल entrepreneur में इन्वेस्ट करने के लिए हेजिटेट करता है कि मैं किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मुझे शेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं, तो मैं क्या करूँगा, कमर्शियल बैंक से आई एम गोइंग टू टेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, विच इज़ अगेन available from the bank itself for the trading purpose. किसी को business करना है, so banks are giving, whether it is your Mahila Gruhodyog, also for the woman in less rate of interest, the loan which is provided from 10,000 up to 1 lakh up to 2 lakh as per their requirement of the business. तो वो एक ट्रेडिंग ही है, राइट? ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, आप जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो एक ट्रेडिंग होता है, और एल्स जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लोन लगता है, सो कमर्शियल बैंक उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, सो विच इज़ अगेन हेल्पफुल for the employment generation, right? Which is very simple topic and simple word I had used so that you can understand easily. Next it says employment opportunity. अभी कमर्शियल बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरह से करता है? कमर्शियल बैंक क्या करता है? बैंक प्रमोट इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट. इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बैंक जो है इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, और इन्वेस्टर को है पैसा देता है कि ये इन्वेस्टर है, ही इज़ वेरी बिग इन्वेस्टर, बिग शॉट इन्वेस्टर, सो आई विल लेंड मनी टू हिम एंड ही विल क्रिएट अ प्रॉफिट फॉर मी, राइट? It is automatically generate employment opportunity, so which increase the employment level of income, standard of living of a person, spending power. So it increase into many aspect. ये just employ opportunity जो है जनरेट नहीं करता है. अगर किसी बैंक ने एक इंडस्ट्री को लोन दिया है, तो वो इंडस्ट्री अगर सेटअप होती है, वो इंडस्ट्री में 10,000 लेबर की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो you can imagine, just for the approval of loan, that particular owner set up the industry, and owner is giving the employment for the, he required to work in his factory or in his industry, 10,000 labor is required. So imagine 10,000 ऑलरेडी लोगों के पास जो है जॉब अवेलेबल हो जाती है, राइट? विच इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट,
सो विच इज़ इनडायरेक्टली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर बैंक ने मना कर दिया कि हम इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज को लोन नहीं देंगे, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो विच डेवलप्ड अवर जीडीपी ऑल्सो समहाउ. राइट, यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि एक लोन कैपेसिटी या फिर एक लोनेबल अमाउंट प्रोवाइड करने के लिए industries are getting loan from the bank, and industry also developed by their own area, and also bank is also getting interest. Both are also doing the same business on their own stage, and also third party, that is the labor, the citizen, they also get the employment opportunity. उनके पास इनकम आता है, इनकम आता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ता है, एंड again spending capacity increase, which again helps for the your increasing in purchasing power. So you can imagine one aspect lead to the many points. Next, what it says, balance development of different region. Balance development क्या होता है? What is balance development? Commercial bank is play a very important role for achieving balanced development. Balanced development in a country, they help to transforming surplus capital from developed regime to the less developed region. The traders, industrialists, etc. of less developed regions are able to get adequate capital for meeting for their business. That means balance development of different region. Balance development मतलब क्या होता है? अगर किसी बैंक के पास surplus capital है, then they transfer their capital for the trader, for the industrialist, for the different region, for the रूरल एरिया, फॉर रिमोट प्लेस, कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट है क्या, वहाँ पे कोई ब्रांच ओपन हो सकती है या नहीं, विच अगेन गिव्स द मोर support to that particular region. The next, agriculture development. बैंक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी किस तरह से हेल्प करता है, राइट, विच इज़ योर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. We will see that agriculture development. So how it develop the agriculture? Commercial bank finance short term, medium, long term loan most important sectors, that is your agriculture for the farmers. अभी farmers को loan क्यों लगता है? Farmers require loan for purchase of seeds, fertilizer, installation of tube wells, construction of warehouse, purchase of tractors, thresher, etc. to set up irrigation system. So that is important for the farmers also to get loan from a bank. They should not go to the money lender. They should approach formally to the bank so that they will not get exploited from the other money lenders. That is again important. So agriculture industry, agriculture sector, if it develops, which is automatically develop our export, right? The next, had left the one which is development of the foreign trade. Foreign trade किस तरह से डेवलप होता है? कमर्शियल बैंक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में development of foreign trade, which helps for two different countries to undertake business. Letter of credit issue करता है बैंक अपने ट्रेडर के बिहाफ में, दैट इज़ अगेन विच इज़ हेल्प फॉर द ट्रेडिंग. इमेजिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. अभी फॉरेन एक्सचेंज अगर कंट्री के पास आता है, देन which again helpful for the nation to settle down the balance of payment equilibrium, which is very important aspect, right? The letter of credit, that means letter of credit क्या होता है? दो traders, दो नेशन के दो ट्रेडर्स अगर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, इफ़ द अमाउंट इज़ वेरी हाई, देन दे give letter of credit on behalf of your trader that they are going to give certain amount in your bank. अगर अमाउंट ज़्यादा है तो, राइट, द अमाउंट की द अमाउंट वैल्यूएशन इज़ वेरी हाई, देन एक बैंक आपके बिहाफ में जो है LOU, लेटर ऑफ क्रेडिट, विच इज़ अगेन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. द नेक्स्ट टॉपिक विच सेज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी. हाउ इट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सही में इन्फ्लुएंस करता है? Yes, it influence. How it influence? The banks are also influence the economic activity of a country, availability of credit, राइट. एक तो इन्फ्लुएंस करता है कौन से सब्जेक्ट में? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. सेकेंड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफ अ कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन
or a borrowing, the rate of interest. That means in simple word I will explain, influencing economic activity, that means अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मुझे कितना क्रेडिट, कितना लोनेबल अमाउंट मुझे क्रिएट करना है, या फिर मुझे लोगों को कितने परसेंटेज, कितने अमाउंट तक लोन देना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए. अगर आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हो, सो ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू कम टू योर बैंक, दे आर गोइंग टू अप्रोच लोन फॉर द हाउस, फॉर द ट्रेडिंग, फॉर द बिजनेस, फॉर द एनी अदर रीज़न, right? So which also influence the economic activity. 8 it says monetization of the economy. What is monetization? हम कहते हैं ना कि ये वीडियो हमारा मोनेटाइज हो रहा है या कोई हमें मोनेटाइज कर रहा है. हाउ इज़ दैट वर्क? Right, so monetization is nothing but the commercial banks, by opening branches in the rural and backward areas, are reducing the exchange of goods through the partners. That means what? कमर्शियल बैंक क्या करता है? ब्रांचेस ओपन करता है रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, टू accessible the facility for the citizen. The use of money has greatly increased the volume of production of goods, right? So that is again very important, which is a great achievement for economic development of a country. Monetization of economy, that means monetization of economy, which is very easy point. मोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है? हर एक ब्रांचेस में, हर एक बैकवर्ड एरिया में ब्रांच ओपन करके क्या जो जितनी भी इनकम आती है सिटीज़न में, वो क्या करेंगे? अगर अपने यहाँ पे ब्रांच है तो मैं एज अ पर्सन, एज अ सिटीज़न, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम स्टार्ट ओपनिंग माय अकाउंट इन दैट बैंक बिकॉज द बैंक इज़ अवेलेबल फॉर मी एंड आई विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग माय मनी. सो अगेन विच विल कैलकुलेट माय डेली सेविंग, right, which monetize the economic activity. Next it says finance to the development. How it development giving finance, which is very important. Finance are giving for the development, right? So the next one, which is finance to finance to the development. Development for whom? Development of government. Government is very prominent and promoter of a industry in underdeveloped countries for which finance